A 580-bedded super facility block is under construction. I am sure that it is going to be handed over by the end of December 23. We are in process of having a separate medical college building in the campus and also planning in the near future a comprehensive redevelopment plan of the campus under the leadership of the Honorable Minister. For me, it is a great, proud and privilege to lead this institute. I do hope we can raise the level of the work and impart the laudable values of Sri Atal Bihari Vajpayee ji, who once said that I have a vision of India, an India free of hunger, free of illiteracy, and want of free healthcare facilities. I am confident we will further increase our efforts in achieving his prophetic words. In the end, I once again utilize this opportunity to welcome you all for today's function. Jai Hind. Thank you very much. Dhanyavad, sir. I think we can have a big round of applause for the achievements of our institute. Thank you very much. सर ने हमें हमारे संस्थान की उपलब्धियों से अवगत कराया और अब गत वर्ष में हुई हमारी वेरियस एक्टिविटीज़ को एक रिपोर्ट के फॉर्म में हमने कंपाइल किया है, जो एनुअल रिपोर्ट. इस बार इसको नाम दिया गया है संहिता. तो अब इसके विमोचन के लिए मैं सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा और हमारे माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगा कि इनका अनावरण करें. Please join your hands together. Samhita, our annual report. Thank you very much. Thank you, sir. And now I'll invite Registrar of Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, Shri Arvind Kumar ji, to come and carry on with the award distribution ceremony. Shri Arvind Kumar ji. है मेरे पास है इसमें सर जो नहीं है उनके कट लगे हुए थे जो है उनका टिक है सर इसमें क्या कर रहे हो सर कर दीजिए इनको कोई दिक्कत नहीं है. मैं सारे अतिथियों को अनुरोध करूंगा कि कृपया वो सामने आएं और बच्चों को अवार्ड देने का कष्ट करें. हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपर्स से और शुरुआत में हम फर्स्ट प्रॉफ के बच्चों को बुलाएंगे. First of all, I am calling Tanisha Jetli. She is topper in Department of Anatomy. Varun Bansal is topper in Physiology. Chirag Jindal, topper in Department of Biochemistry. Chetan Jindal, he has secured, Chetan Jindal and Akshay Kataria both have secured
first position in third professional. Now from the second prof, Arindam Diwan, he has topper in pathology and pharmacology both. Dhruv Duhan, he is topper in microbiology and also stood first position in second professional. तालियां बजनी चाहिए इनके लिए. ये बहुत ज़्यादा आ रही है. बोल दिया अरिंदम के दोनों बोल दिए. पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी. अरिंदम दीवान इज टॉपर इन डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बोथ. नेक्स्ट ध्रुव दुवन चला गया. नेक्स्ट इज ध्रुव दुवन, इज टॉपर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑल्सो ही हैज स्टूड फर्स्ट पोजिशन इन फर्स्ट प्रोफेशनल. Now from the PGs, Dr. Hema Sri Lakshmi from anesthesiology. Dr. Diksha Agrawal, dermatology. Dr. Anuj Girdhar, ENT. Dr. Anuj Girdhar from ENT. Dr. Ajay Bhatta, General Medicine. रोहित चौहान, जनरल सर्जरी. कोमल जाडोन, ऑब्स्टेन गायनी. डॉक्टर उबैदुर रहमान, ऑर्थोपेडिक्स. डॉक्टर ज्योति मिश्रा, पैथोलॉजी.
Dr. Rituparna Manna, Pediatrics. Dr. Trisha Gupta, Secretary. Dr. Dipsy, MD Radio Diagnosis. Now for super specialties, Dr. Ashok Kumar Thakur, DM Cardiology. Dr. Rahul Bhushan, CTVS. Dr. Navjot Kaur, Nephrology. Dr. Rahul Jain, Neurology. Dr. Pranjal Bharadwaj, Neurosurgery. Dr. Arnab Kumar Saha, Pediatric Surgery. And Dr. Gaurav Gupta, Urology. This is all about the toppers. Thank you. सर धन्यवाद अरविंद जी। और अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज के समारोह के 3 विशेष पुरस्कार। पहले पुरस्कार के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनीता जी, उनके पति श्री सुखबीर सिंह जी और उनकी पुत्री सुश्री नेहा को। सर मैं बताना चाहूँगा, सुनीता जी हमारे अस्पताल में महिला परिचारिका के रूप में 29 वर्षों से कार्यरत हैं। साधारण परिस्थितियों में असाधारण सोच का परिचय देते हुए इन्होंने निश्चय किया कि यह अपनी सुपुत्री को सर्वोच्च शिक्षा देंगी। नेहा ने भी अपनी माता पिता की आकांक्षाओं को पूरा किया और सिर्फ LLB करके संतोष प्राप्त नहीं किया, बल्कि स्नातकोत्तर LLM और PhD को अपना ध्येय बनाया और आज वो सुप्रीम कोर्ट में विधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। कुमारी नेहा और उनके पेरेंट्स A big round of applause, please. Thank you very much. धन्यवाद सर। अगले पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्री अशोक जी, श्रीमती संतोष और उनकी सुपुत्री सुश्री पूजा को। जब अशोक जी ने RML अस्पताल ज्वाइन किया 1996 में नर्सिंग अटेंडेंट के रूप में, तो वो कुछ चिकित्सकों से काफ़ी प्रभावित हुए, किंतु उनको लगता था कि डॉक्टर बनना केवल संभ्रांत और संपन्न परिवारों के बच्चों के लिए ही पॉसिबल है।
किंतु जुझारू अशोक जी का सपना उनकी बेटी पूजा ने साकार कर दिखाया। पीजीआईएमएस रोहतक से एमबीबीएस करने के बाद आज वो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से एमडी एनाटमी परस्यू कर रही हैं। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। और उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों बाद वो हमारे साथ एज अ फैकल्टी मेंबर बैठी होंगी। धन्यवाद। तीसरे पुरस्कार के लिए मैं बताना चाहूंगा कि चरक संहिता में कहा गया है कि मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति रूपेक्षणम। एक डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज या क्लिनिकल एक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है, और उसके लिए आपको बहुत बहुव्यायामी होना पड़ता है। आज के मेडिकल प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हमें मेडिको लीगल चैलेंजेस से भी बचाते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भारती धनखड़ को, जिन्होंने अपने 3 साल की रेजिडेंसी प्रोग्राम में असाधारण एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स का परिचय दिया। डॉक्टर भारती धनखड़ को प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाता है। और अब आगे की डिग्री अवार्ड्स के लिए मैं एक बार पुनः श्री अरविंद जी को निमंत्रण दूंगा। श्री अरविंद कुमार जी। उसके आगे कर रहे हैं वो लोग तब से। बच्चों को तो बुलाओ। अच्छा 33 ऑनवर्ड से 33 तो सही है। 32 इसमें से कौन सा बोल रहा है? 39 नहीं है, 41 नहीं है, 45 नहीं है। रेडी? We are starting with anesthesiology. सर जल्दी दिख रहा है। डॉक्टर अक्ष कनौजिया, डॉक्टर आकाश कनौजिया। हाँ। डॉक्टर अजीम राजा, आप तो लाइन से बोल दो। डॉक्टर अस्मिता वीसी, डॉक्टर बंकर प्रशांत, डॉक्टर चारवी माथुर, डॉक्टर दुष्यंत, डॉक्टर कीर्ताना एस, डॉक्टर खायसे हरीद, ये बोला नहीं बोला, डॉक्टर मयंक अरोरा, डॉक्टर रजिता सी, डॉक्टर सौम्या जैन, डॉक्टर सौरभ मोहन, डॉक्टर शिखर वर्मा, डॉक्टर श्रीराम गौतम, डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा, डॉक्टर तरुणा भाटी, डॉक्टर तरुणा मुरारी, डॉक्टर विशाल विनोद। Now from skin department, Dr. Astha Agrawal, Dr. Soumya Sasdeva,
and from ENT department. बोल मैं डॉक्टर पूनम रानी, डॉक्टर सृजन गुप्ता, now from medicine department, डॉक्टर अक्षय विजय, आकाश विजय, डॉक्टर आदिल अमीन, डॉक्टर आदिला अली, डॉक्टर अंजू, बोलना नहीं बोलना, डॉक्टर अंकुर कुमार, मैं बहुत आगे हूँ। कौन है अभी, कौन है, किसका नाम बोलना है? अब ऋषभ कहाँ गया? डॉक्टर ऋषभ नायक, डॉक्टर रोहन कृष्णा सियार, डॉक्टर रोहित सैनी, डॉक्टर शुभम बेहरा, डॉक्टर वेल मुरुगन, पीछे से पता नहीं चल रहा ना। नाउ फ्रॉम सर्जरी डिपार्टमेंट, डॉक्टर अग्नेश सिंह शेखावत, डॉक्टर अक्षय फडनीस, डॉक्टर अमन राज, डॉक्टर अंकुर, डॉक्टर अरुण गर्ग, डॉक्टर अरविंद कुमार शेखर, डॉक्टर अश्विनी कुमार, डॉक्टर ध्रुव गुप्ता, कौन और डॉक्टर पोलारव्यू नवीन कुमार, डॉक्टर पाय रोबिनोर, डॉक्टर टायोट कुमार चौधरी, एंड डॉक्टर उदित खुराना। एक मिनट रुकिए भाई, कंफ्यूजन होता है। फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, डॉक्टर सुप्रिया कटियार, फ्रॉम ऑब्स्ट एंड गायनी डिपार्टमेंट, डॉक्टर आयुषी पाल, अरे यार, डॉक्टर मनमीत कौर मान, डॉक्टर निशा पूनिया, अरे यार कहाँ पहुँचा दिया, डॉक्टर परिधि गुप्ता, एंड डॉक्टर सुरभि। फ्रॉम ऑफ्था डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी, डॉक्टर अनुज कुमार, डॉक्टर हिमांशु गरकोटी, डॉक्टर अश्विनी वर्मा, ऑर्थोपेडिक्स आ गया, डॉक्टर निपुणी फ्रॉम ऑर्थोपेडिक्स, अरे यार, डॉक्टर चित्ती श्रीलता, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर स्वाति राव, डॉक्टर अभिनंदन एचएस, फ्रॉम पीडियाट्रिक्स डॉक्टर आदित्य कुमार संगवान, डॉक्टर अक्षय दयाल, कहाँ पे
Dr. Alpna Meena, Dr. Athira K, Dr. Kumar Abhinav, Dr. Nitish, Dr. Sudhir Baghel, and now from Secretary Department, Dr. Rohit Kumar, Dr. Surabhi Bishnoi, Dr. Surabhi Batra, Dr. Vibha Tomar. From Radio Diagnosis, Dr. Anirban Maji, Dr. Ankita Kanwar, Dr. Ira Agrawal, Dr. Rangjung Dolma, Dr. Avinash Rastogi from Diploma of Child Health. From DM Cardiology, Dr. Ajay Pratap Singh. Dr. Rajiv Bhardwaj, Dr. Vinod, and from CTVS, Dr. Vaibhav Chub. From Nephrology, Dr. Mansi Singh. Neurology, Dr. Bijlal. आई के छूट गए हैं नहीं सर. आई की बुलाई Dr. Shah Mansi Parveen. From Neurosurgery, Antariksh Joshi. Dr. Kuldeep Singh. Dr. Manoj Kumar Agrawal. Dr. Anil Kumar from Pediatric Surgery. Dr. Gali Divya from Plastic Surgery. Dr. Aparajita. Dr. Rajasri. And the last one from Neurology Department, Dr. Vivek Sharma. हाँ सर. किसका 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 हो गया ना. धन्यवाद सर. अब मैं आग्रह करूंगा कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें. धन्यवाद सर. मेरे लिए ये बहुत ही हार्दिक प्रसन्नता का विषय है कि अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मृदुभाषी एवं सौम्य व्यक्तित्व के धनी हमारे स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रोफेसर अतुल गोयल जी, जो अपने आप में एक बहुत ही योग्य चिकित्सक और कुशल शिक्षक हैं. ये बहुत लंबे समय तक हमारे परिवार का हिस्सा रहे हैं और अब मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आके अपने विचार हमारे साथ साझा करें. प्रोफेसर अतुल गोयल. Thank you for the kind words. I'll not be very stretched in what I say. Honorable Minister of Health, Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji. Niti Aayog Member Health, Dr. Vinod Paul. Health Secretary, Sri Rajesh Bhushan ji. Vice Chancellor, Guru Gobind Singh University, Dr. Mahesh Verma, whom I happened to meet for the first time today, and it was a pleasant experience. MS ABVIMS and Dean ABVIMS. Well, I have had a long association with your institution, or my institution, as I would say,
in the entire 3 parts, when it was Raman or Lohia Hospital, I came to the institute as a patient way back in 1970. That is where I decided to be a doctor. So that's the first stage. Then when I came to the institution to join, it was Postgraduate Institute of Medical Science, Postgraduate PGIMR, where I joined as a head of unit, and I remained as head of the unit for about 16 years before I went back to my old institution. So by the time I went, it was already ABVIMS. So I've seen all the 3 phases. I also see a lot of stalwarts from my field in the audience. I see my colleagues from the Ministry of Health and Family Welfare. Well, all my colleagues and friends from the institute, students, residents, and friends. A lot of students have worked with me also in the Department of Medicine. I have been through their journey. Well, after a long time, we've been able to meet physically. Convocation was missed for the past 2 years, and that's a relief. So, warm wishes to all residents, students on the occasion of the Foundation Day, and heartiest congratulations to all awardees. In fact, I go back to the old memory when I had my own convocation way back in 1986. There are 3 points just I would like to touch upon. There were 4 actually. One I discussed before the function with Dr. Mahesh Verma already regarding a paperless thesis, which is agreed to. The second part is, as we grow in life as individuals and doctors, you've all got your postgraduate degrees. It is imperative that we assume greater responsibility towards the institution, society, and the country as a whole. It's not just a degree that you've got a greater role to play in the society, in the institution, and the country. The second part is the heart of a teaching institute is a vibrant and open interaction. I say a vibrant and open interaction, not just between students and teachers, between faculty members, between staff and faculty members, even between patients and doctors. So that is the heart of an institution, and you must strive to get that heart into that institution. Now, progress is not always about new buildings, about new courses. Progress also has to be spiritual for an institution in terms of interpersonal relationships between various components of an institution. Often institutions are lost because the various components of the institution don't interact with each other, have tiffs over small things. We need to grow beyond that, because it is natural that an institute which grows spiritually will have an all-round development and growth. So I wish you success in times to come. Thank you. धन्यवाद सर। मैं ऑडियंस में बैठे सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया अपनी सीट पे बैठे रहें, ताकि हम लोग हमारे विशिष्ट अतिथिगणों के उद्बोधन को ध्यान से सुन सकें। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के उपकुलपति एवं अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH के अध्यक्ष डॉक्टर BC रॉय एवं राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी सम्मान और अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत पद्मश्री प्रोफेसर महेश वर्मा जी, कृपया आप आके हमारा ज्ञानवर्धन करें। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। परम आदरणीय ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर श्री मनसुख मांडविया जी सर, डॉक्टर विनोद कुमार पॉल, मेंबर नीति आयोग, श्री राजेश भूषण, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रोफेसर अतुल गोयल, DGHS, प्रोफेसर BL शेरवाल, डायरेक्टर and MS, प्रोफेसर अशोक कुमार Dean. I see a lot of heads of the institutions here, Dr. Anil Agarwal from Panth, Dr. Bhattacharya from Ambedkar, Dr. Geetika Khanna, Dr. Harsh Mahajan from Mahajan Imaging, and Dr. Pavan Kumar, a lot of officials from ministry here. It's a sheer delight for me to be here today amongst you at the occasion of 4th Foundation Day and Convocation Day of the Institute. In fact, it's a double celebrations. The Foundation Day is a very important occasion, important day to acknowledge and celebrate the inception of the Institute, making it possible due to the vision and hard work of its founders. It's also an occasion to celebrate
the continuing hard work, which is currently being done under the leadership of Dr. Sherwal and others, and along with other faculty, students of the Institute. This day reminds us of a great legacy. It has been a really long checkered history for this institute. Started as Wellington Nursing Home in 1982, and over the years it has had many avatars as a Wellington Hospital, then RML Hospital, then it became PGMER, and currently now Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences. And it got affiliated to our university, Guru Gobind Singh University, in 2005. And ever since, I think we have done a good progress. We have recently started MBBS program. Prior to that, there were postgraduate programs, almost 200 seats in broad specialties and 40 seats in super specialty. And we also have a nursing college, which is part of the affiliation. Students of this institute has performed very well academically, as you've already seen. They got medals and medallions, and I feel that this is one of our niche and a flagship institute of our university. So, dear students, we are very happy today to be amongst you, sharing the golden moments in your life, because I think it's a very momentous occasion, convocation for a joy, not only for students, I think for faculty, for staff, and parents. Convocations, besides being ceremony to celebrate, rejoice, receive degrees and medallions, it's also an occasion to reflect back, to look back at the persistence and dedication shown by you students to earn your merit credentials. We are gathered here to celebrate your graduation. We are here to share your happiness. We are here to congratulate you. And of course, we are here to thank your teachers, your parents, your peers, and everybody who has made it happen. Let's give them a big round of applause. Convocation is a day that reminds us that all our dreams can come true if only we have the courage and conviction to realize them. कहते हैं कि आस्था और धारणा से कहीं तक भी पहुंचा जा सकता है. So convocations also commemorate students' transition from the safe havens of the institute to the big bad world, the challenging of the outside world. एक संरक्षित दुनिया से एक वास्तविक संसार जो बाहरी दुनिया, as most of them are have done postgraduates today, and they are moving out of this hall armed with degrees. And some of you, of course, might join back as super specialties, but most of you are entering into a new exciting phase of your life, and a life which is full of endless opportunities for most of you. You are lucky. When I look back, when I was a student 45 years back, I feel that you are very lucky that you are passing out during a very exciting times of the medical profession. Don't you think that the entire landscape of the medical profession has changed in the modern times? Because present-day care is so much tech-oriented. We have AI, we have robotics, we have machine learning, we have a non-invasive technology-aided intervention. I think all these things will further improve the efficiency and delivery of the healthcare system. So it's just a tip of the iceberg. I think it's just a beginning. And I'm sure all of you, you're young, you have a long life in front of you. You will be witness to the revolution ahead. You're also bound to conquer the field, because with the endless opportunities you have, and I'm sure looking for success. And as we are very fortunate that we are a young nation, we are a youthful nation. 65% of our population is below 30 years of age, and you're a part of this great nation, a youthful nation, having the capability and potential of immense creativity, innovation, problem solving, and entrepreneurship. Our entire world is looking at us today. In fact, the corona vaccination success story that has further strengthened this belief and trust in us.
Our country is doing very well. I think Indians all across the world are solving the problems, isn't it? So it's all of you who will make us world power. We are already on the way. We are on the cusp of being developed to developing, and all of you, the youth, young doctors, young professionals, will make it happen. When you are young, you not only have the dreams, but you also have the drive. So it's a fantastic synergy, dream bhi and drive bhi. Most of you, I suppose, chose this profession because you had in you that the need to serve the humanity. That perhaps was the purpose that you saw in your life. The rigors, of course, the medical profession, medical education sometimes make us forget that, and we are really, we sometimes forget that we are part of this noble profession. Our call of the day is to put service before self. Our goals are to heal the sick and help maintain the health in others. And this has to be done with compassion, humility, and ethics. The commercial aspect of our profession, which you get to see these days, is should only be a spin-off. I feel it is not the core objective of your profession. It's, of course, when you do well, you also do commercially well. So I only feel that it's just a spin-off and not the real part. So the question is, what is the purpose of our lives? I think that needs to be in forefront. And like a great thinker said, that the purpose of life is to make some difference to society, to humanity, to in somebody else's life. You are lucky that in our profession, we have a direct chance of every day to make a difference in somebody's life, isn't it? I feel there are very few professions which deal with community, deal with society every day, and you are lucky that we are in that profession. So be grateful for the opportunity, choose compassion, make a difference, and in life, finally, only those people are remembered who make a difference, isn't it? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव जाति की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यही ईश्वर की आराधना है. हम सब मानव जाति की सेवा से सीधे जुड़े हैं, और हमारे लिए ये बहुत गर्व और बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. Our country needs you to invest in the healthcare of its citizens, and there will be, however, many challenges you would be facing. Of course, in your future endeavors. We are so short of medical manpower, especially in rural areas, so we need you to help build the medical infrastructure of this country. So are you up? Are you for it? You get this human life only once. जो मानव जीवन है वो एक ही बार मिलता है. So there is no once more. What are you going to do with it? So that should be your dhey. That should be your astha. Before I end, I want to sincerely acknowledge the human service that the entire medical fraternity has provided, including RML and Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences during the trying pandemic times, steered by Ministry of Health, Niti Aayog, DGHS, and the leadership is right here to be complimented for the brilliant work. Let's give them a big hand. I would also like to take this opportunity to acknowledge with gratitude the keen interest shown by our Honorable Health Minister, Mandaviya Sir, in quality and accreditation of health establishment through NABH, especially for government institutions. Thank you, sir. I just want to share that I'm chairing NABH incidentally these days, and since its inception, NABH is involved in improving the quality of care of various categories of healthcare organizations. The government has always been a very important stakeholder of NABH. Many government hospitals and primary health centers have implemented NABH standards and received NABH accreditation and certification. And I want to share with you that it was Mandaviya Sir's intervention that the Safdarjung Hospital got entry-level certification. And now RML is in pipeline. It is already there. The process is on, and I'm very sure that very shortly you will be on the way of getting this entry-level certification, and you will become a role model and a trendsetter for other government hospitals in not only the city, but I think across the country. On behalf of NABH, I would like
to today put on record our appreciation to Mantriji, Sir, Minister Sir, Honorable Health Minister, and the support of all the dignitaries which are present here. NABH, to NABH, journey of NABH in improving the quality of healthcare. Thank you, Secretary Health, Sir, Shri Rajesh Bhushanji, Dr. V.K. Paul, Niti Ayog, to make it happen. Government initiatives in developing holistic approach and universal health coverage in healthcare is commendable. We must appreciate that. I was last week lecturing in London. I shared with them the greatest insurance scheme we have in the world under PMJ and Ayushman Bharat and all other endeavors, Jan Ayushdi, and many other endeavors which are playing a very important part in our country this time, and this is impacting hugely all across in the country. In the end, let me also take this opportunity to thank Dr. Sherwal, Professor Ashok Kumar, the Dean, and all other heads of the department, others faculty, for giving me this opportunity to be amongst you this afternoon, and my best wishes and blessings to all the dear students and all the achievers, medallion achievers. May you see many years of success and prosperity. Go out. It's your time now. Go leave a mark. Thank you. Dhanyavad. Thank you, sir, for your morale-boosting and exhilarating words that fill us with confidence today. And we should have another round of applause for sir. Thank you. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण जी, जिन्होंने कोरोना काल में देश के स्वास्थ्य सेवाओं को सुव्यवस्थित रूप से चलाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि सर की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन हमें सदैव ही प्राप्त है। परम आदरणीय श्री राजेश भूषण जी से अनुरोध करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, इस समारोह में उपस्थित सदस्य नीति आयोग डॉक्टर विनोद कुमार पॉल जी, डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रोफेसर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रोफेसर BL शेरवाल और मंच पर हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर प्रोफेसर अशोक कुमार, जो इस संस्थान के डीन हैं, यहाँ उपस्थित सभी फैकल्टी के सदस्य, सभी स्टूडेंट्स, उनके मित्र, उनके अभिभावक, उनके परिवार के सभी सदस्य, मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज न केवल इस संस्थान का फाउंडेशन दिवस है बल्कि दीक्षांत दिवस भी है। And therefore it becomes important because this is the culmination of all the effort, all the hard work that the students have put in, and a large number of you have today received your postgraduate degrees. मैं केवल ये कहना चाहता था और संक्षेप में कि आपने मेहनत की, आपने अपनी डिग्री हासिल की, आपने अपने डोमेन का नॉलेज हासिल किया, कुछ लोगों ने सुपर स्पेशलिटी का नॉलेज हासिल किया। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो कि आगे अगर आप अच्छे डॉक्टर बनते हैं या अच्छे डॉक्टर के साथ साथ अच्छे टीचर भी बनते हैं, जो महत्वपूर्ण होंगी। और ये 3 चीज़ें हैं संवेदना, संवाद और स्पर्श। संवेदना का अर्थ है एम्पैथी, हैविंग एम्पैथी विद योर पेशेंट्स। आप ये रियलाइज़ करें कि जिन लोगों को आप देख रहे हैं वो किसी न किसी कष्ट से पीड़ित हैं, तो आप कितना एम्पैथाइज कर सकते हैं उनके साथ, ये महत्वपूर्ण है। मैंने स्वयं अपने जीवन में देखा है, मुझे तो अब 35 साल हो गए IAS में, मैंने ये देखा है कि लोग बहुत प्रोफेशनल होते हैं, बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बट दे कम अक्रॉस एज प्योरली मैकेनिकल, सो आई डोंट रिलेट टू देम, so it is and I don't even feel any connection with them. So at the end of that transaction, whether it is a dialogue or a consultation,
I don't feel satisfied. So therefore it is important to develop a empathy with your patients. संवेदना महत्वपूर्ण है, केवल ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है. दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो संवाद है. जैसे जैसे नॉलेज को हम एक्यूमुलेट करते हैं, ज्ञान का संग्रहण करते हैं, तो हम कम्युनिकेशन भूलते जाते हैं. हमारी क्षमता लोगों से संवाद स्थापित करने की, उसके लिए थोड़ा आपको इनफॉर्मल होना जरूरी होता है. आप कहेंगे कि मैं हर समय टाई पहन के ही, आई हैव नथिंग अगेंस्ट टाई, सो हर समय मैं कोट और टाई पहन के ही रहूँगा और मैं कुर्सी के पीछे ही बैठा रहूँगा, टेबल के पीछे और कुर्सी के ऊपर, मैं वहाँ से खड़ा ही नहीं होऊंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मरीज़ की तरफ जाऊंगा ही नहीं, तो वो संवाद स्थापित नहीं होता है. तो इसलिए द सेकेंड क्वालिटी दैट वी मस्ट ट्राई टू इनकलकेट इज ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद. और तीसरी मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है स्पर्श. हम अपने समाज में स्पर्श को भूल गए हैं. अंग्रेजी में कहा जाता है हीलिंग टच, डॉक्टर के लिए ही कहा जाता है, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हम बाबू लोगों के लिए नहीं कहा जाता कि ये हीलिंग टच देंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, ऑल्दो इट डज नॉट प्रिवेंट अस फ्रॉम प्रोवाइडिंग दैट हीलिंग टच, एंड सम ऑफ अस डू. तो कमिंग बैक टू स्पर्श, ये महत्वपूर्ण है कि मरीज को लगे कि डॉक्टर ने मुझे छुआ और वो छूने से मेरा जो दुख, दर्द, तकलीफ वो दूर हुई. तो ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, संवेदना, संवाद और स्पर्श. इस मौके पे मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ. द डिग्रीज एंड द एक्कोलेड्स दैट यू हैव रिसीव्ड आर वेल डिज़र्व्ड. मैं शुभकामनाएं देता हूँ अभी आपके अभिभावक गणों को. मैंने देखा उनमें से कई बहुत जोश से आपकी फ़ोटो ले रहे थे. तो दिस इज़ ए वेल डिज़र्व्ड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस. यू मस्ट enjoy, must prolong it, this is your day. मैं शुभकामनाएं देता हूँ आपके मित्रों को भी. मैं कह रहा था DGHS को कि जब कुछ लड़के या लड़कियाँ आए तो उनके लिए ज़्यादा हल्ला हुआ, वहाँ से ज़्यादा तालियाँ बजी, तो दे मस्ट हैव डन समथिंग. उनका कम्युनिकेशन बेहतर होगा, उनकी एम्पैथी बेहतर होगी, उनका स्पर्श बेहतर होगा. तो इसलिए आप सबको शुभकामनाएं हैं. मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में आप प्रगति के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर पहुंचें. बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं. संवाद, संवेदना और स्पर्श की महत्ता सर ने हमें बताई. और सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह हमारा MBBS प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, ऑडियंस में जोश भी बढ़ता जाएगा. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विश्व प्रतिष्ठित बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार पॉल जी, जो नीति आयोग के सदस्य के रूप में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी नीति निर्धारण की बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं. मैं आदरणीय प्रोफेसर विनोद कुमार पॉल जी से अनुरोध करूँगा कि अपने विचारों से हमें प्रेरित करें. सर. धन्यवाद. नमस्ते. Honorable Union Minister for Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers, Dr. Mansukh Mandaviya ji, respected Dr. Shri Rajesh Bhushan ji, Secretary Health, respected Dr. Atal Goyal ji, Director General of Health Services, respected Dr. B.L. Sherwal ji, Director, Atal Bihari Vajpayee Institute of Medical Sciences, Dean, Registrar, distinguished faculty of this very promising, emerging jewel of India, ABVIMS, distinguished faculty, esteemed guests, those who got the degrees, the graduates and the postgraduates and the residents, parents and families, and dear colleagues. First and foremost, I am very honored to be here
in taking part in the 4th Foundation Day of your institute. I knew about Willingdon Nursing Home before I learned anything about the All India Institute of Medical Sciences, which is my alma mater. You represent that legacy, and you gradually transformed into a great institution. I congratulate you. You have demonstrated a full transformation of a great hospital into a very successful teaching institution. I congratulate you, and that calls for an applause. Honorable Sir, it's not easy, sir, that functional, well-run hospitals, particularly in the government sector, will become medical colleges and thrive. There are many challenges, very many administrative challenges, other challenges, resource needs. This transformation is not easy. But ABVIMS has demonstrated that this can be done, and this can be done very, very successfully. That's your great achievement. And I adore you for that. Congratulations, congratulations. The achievements of the institution have been highlighted, and we are truly proud, Dr. Sherwalji and team, and this distinguished faculty, that you are emerging as a center of excellence. And we can see the hard work that's being put by the faculty and the staff of the institute. I would like to congratulate the parents and the families for the achievements of your daughters and sons. Your hard work, the sanskaras that you give, have led to this day on which your children, your daughters and sons, have now achieved, got the degree, and are ready to serve the nation as doctors. Congratulate the prize winners. But also, it is a day on which the students must remember the role played by your teachers. Aap sun rahe hain? The role played by your teachers and mentors. How did we learn? How did we transform ourselves into a raw student, into a doctor? Well, that happened because the teachers gave you the skills, the love, affection, the knowledge to transform you. So today we would like to also submit our respect to the teachers who are present here. Teachers and taught have a special bond, a special collaboration. A prayer in the Upanishad sums up this affiliation adorably, and that's my favorite quote. I've been a lifelong student, but also lifelong teacher. So let me say what the Upanishad said. I quote, Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahi. Unquote. May He protect us both, the teacher and the student. It's a prayer. May He nourish us both. Help required from the Almighty. May we both serve together with great energy. Why you need the blessing of the Almighty? So that we both serve with great energy. And that is the essence. Interaction for knowledge is for glorious purpose of serving the society. I want you to remember that, serving the society. That is the purpose of your education, my education, and of course, particularly for medical education. I want you to remember that. There are 3 suggestions I like to make to the leadership of the institute. First, I like you to celebrate also the research of your institution. The report demonstrates several areas in which good work has been done by the students and the faculty in particular, and you have grants and other endowments. But I like you to have this occasion being used also to reward and to dedicate and to showcase research. So best thesis research, for example, best faculty research and so on should be celebrated, because an institution, a teaching institution, has a third function of advancing the knowledge.
not only using the knowledge and disseminating and sharing the knowledge, but advancing the knowledge. And the kind of faculty you have a great potential, and we are there to support you in that endeavor. My second suggestion is that you in your fraternity also have nursing students. The fourth foundation day should have seen nursing students being present here, nursing fraternity. So bring the nursing awards and the nursing degrees also into the same convocation. And my third suggestion is actually a challenge to the faculty and to the leadership. I would like to see this institution, which has everything going good for it, in terms of visibility, in terms of resources. I told you, Willingdon Nursing Home was the most famous hospital of our nation in the 60s and 70s. It was, till actually AIMS came up, and that's history. So you have that legacy, you have resources, you have the blessings of the government of India, you have the blessings of our Honorable Minister Sahab. So you have everything going good for you. So here is a challenge. When we meet here for the 10th Foundation Day, I like to see your college, your institute, among 25 best medical colleges of India. Would you do it? You are only 4-year-old. You have 6-7 more years to work. Let's have a spirit of competition. And I think it can be done because you have the resources, the visibility. In Delhi, you're getting great students, you have great teachers, and great blessings of the government. So this is a third suggestion that I'd like you to keep in mind. I'd like to dwell on the theme of values to which my previous speakers, both Shri Rajesh Bhushanji and Dr. Verma, have alluded to. I want to state that teaching institutions, universities, colleges of every shade, art, science, commerce, management, of course, medical education, have always two functions. One is to impart knowledge, attitude, in skills, as the case may be. But the other purpose is to build character. Other purpose is to bring values into you. That's our constant purpose. It's an invisible purpose. And Dr. Shri Rajesh Bhushanji alluded to an important aspect of that theme very eloquently. I want to state that excellence, that means achievement in the profession on the highest yardstick, and values must go hand in hand. Excellence and values must go hand in hand. Professionalism is incomplete without humanism. You can be a great professional, but if you're not a good human being, you could be a great institution, but it is beset with horrible, cutthroat, culture of that kind of competition. It's not a great institution. So excellence and values must go together. Excellence without values or vice versa is not good enough. It's not good enough for the society and for the country. Excellence and values together make a professional, a doctor, a responsible citizen, and a karmyogi. Faculty, you have the responsibility to ensure that you nurture both excellence and values in your students and your mentees. And how do you do it? By practicing both in your own way of life on a daily basis in a seamless way. If teachers don't practice what they want their students to practice, students will do what they want to do, not what you want them to do. Remember that. Students do what you do and not what you say. So be the role models. Excellence and value must be reflected in the behavior of the teachers as well, so that the students embrace. And it's about an example. It's one value. One example of that is, would you come in at 3 o'clock in the morning to see a poor patient because she needs your help? Or would you do it only for a sifarish? Is that part of our character? Do we do samvad? Do we empathize? So excellence and values must go in hand, and let that be the moral compass of this institute. Let me remind us all that
remind us all of the astute words of prudence of the father of our nation on the same theme. Mahatma Gandhi named 7 deadly sins in life, and these are well known, but let me quote, I quote, wealth without work, the first sin. Pleasure without conscience, the second sin. Science without humanity, the third sin, and that applies to us on a daily basis. Medical professionals are driven by science, coupled with humanity. Knowledge without character, refer to that. Politics without principle, commerce without morality. Many of you will join commerce, will do private sector. You'll earn money out, and so on. But that should not be without morality. And last, worship without sacrifice, I quote. I hope this philosophy that applies to all of us, we will remember, particularly because we belong to a profession where this balance is expected of us. Friends, faculty, the leadership of this institute, and those of us on this side today, let us rededicate ourselves to the service of Mother India. Jai Hind. Thank you. Thank you, sir, for your words of wisdom. They would inspire us for long. And on a lighter note, it is but natural that when one of the top pediatricians is speaking, there would be a sound of the child in the auditorium. So I think we should have a round of applause. और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आज के उत्सव पुरुष माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, विलक्षण प्रतिभा के धनी श्रद्धेय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को, जिन्होंने अपनी प्रगतिशील एवं सकारात्मक सोच से हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत आगे ले जाने का निश्चय किया है। मैं सर से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो आज इस ऐतिहासिक पल पे अपने आशीर्वचन कहें। सर, प्लीज रिमेन सीटेड, काइंडली डू नॉट मूव इन द ऑडियंस। Atal Bihari Vajpayee इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के स्थापना दिन एवं कॉन्वोकेशन दिन के अवसर पर मंच पर उपस्थित नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल साहब, सेक्रेटरी हेल्थ राजेश भूषण जी, वाइस चांसलर गुरु गोविंद सिंह जी यूनिवर्सिटी डॉक्टर महेश वर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज मेरी दृष्टि से 3 कैटेगरी में लोग बैठे हैं। लेफ्ट साइड में पेरेंट्स है, मिडल में कई पेरेंट्स और फैकल्टीज है, राइट में स्टूडेंट है। सभी के लिए ये आज का दिन ये महत्वपूर्ण है। जो पेरेंट्स है उसके बेटे बेटी आज डिग्री लेके अपने जीवन के एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। भला कौन सा ऐसे माता पिता नहीं होते जिसको अपने बच्चे अपनी अच्छी कैरियर बनाए, स्वयं का भी गौरव बढ़ाए, माता पिता का गौरव बढ़ाए और राष्ट्र का भी गौरव बढ़ाए। ये अपेक्षा माता पिता की होती है और इसलिए ये महत्वपूर्ण क्षण को देखने के लिए यहाँ उपस्थित रहे हैं। मैं ऐसे माता पिताओं को अभिनंदन करता हूँ। दूसरा दोस्तों, फैकल्टीज, टीचर्स, हमें कभी पता नहीं होता है कि स्टूडेंट जब अपनी पढ़ाई पूरी करके जाते हैं,
माता पिता को अपने बच्चे के प्रति गौरव होता है। मैंने मेरे जीवन में देखा है, टीचर्स को कभी अपने माता पिता से कम प्रेम अपने स्टूडेंट के प्रति कभी कम नहीं होता है। जितना प्रेम माता पिता करते हैं बच्चे को, इतना ही प्रेम स्टूडेंट टीचर्स अपने स्टूडेंट को करते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है, जब बच्चे स्टूडेंट यहाँ कोई सम्मान प्राप्त करते हैं, कोई मेडल प्राप्त करते हैं, तब फैकल्टी को लगता है, टीचर्स को लगता है कि मैंने जो ज्ञान दिया है उसका ये आउटपुट है। जितना आनंद बच्चे को होता है, इतना ही आनंद और खुशी फैकल्टीज को भी होती है। और यही उसको भविष्य में बच्चे को और पढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसलिए एक अच्छे नया भारत के निर्माण में सहयोग करने वाले फैकल्टीज को भी मैं अभिनंदन करता हूं। और तीसरा स्टूडेंट, जिसको आज कई स्टूडेंट को मेडल भी मिला, कई स्टूडेंट को डिग्री भी मिली। आज से आप लोग अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अपना नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस दिन आपने एमबीबीएस में एडमिशन लिया होगा उस दिन और आज यूजी पीजी करके 8-9 साल के बाद जब आप डिग्री लेके निकल रहे हैं, तब जब एडमिशन लिया होगा तब की स्थिति और आज जब आप पास आउट होके निकल रहे उसकी स्थिति के बीच में बहुत कुछ बदलाव आपने देखा होगा। आपने बीच में कोविड क्राइसिस देखी, कोविड क्राइसिस के पहले की स्थिति, कोविड क्राइसिस के बाद की स्थिति दोस्तों बदल चुकी है। पहले की सोच के स्थान पर एक नई सोच आकार ले रही है। दोस्तों, देश बदल भी रहा है, देश आगे भी बढ़ रहा है। वैसी स्थिति में राजेश भूषण जी अपनी बात में बहुत अच्छी बात कर रहे थे। आप स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी कैरियर बनाने जा रहे हैं। कई लोग अपने हॉस्पिटल चालू करेंगे, कई लोग, कई डॉक्टर्स फैकल्टीज के रूप में, टीचर्स के रूप में काम करेंगे, कई रिसर्चर के रूप में काम करेंगे, कई स्टूडेंट साइंटिस्ट के रूप में भविष्य में काम करेंगे। दोस्तों, बदलती हुई परिस्थिति में हम जिम्मेवारी के साथ नेशन के प्रति क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसके लिए विचारने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा विषय है जिसमें देश की सामाजिक दायित्व और देश की हेल्थ की दोनों की जिम्मेवारी सामाजिक और आर्थिक दोनों स्थिति पर इफेक्ट करने वाला एक सेक्टर है। कोई देश को आगे बढ़ना है तो देश में स्वास्थ्य सेवाओं सुदृढ़ हो, देश स्वस्थ हो, और स्वस्थ देश ही समृद्ध राष्ट्र बन सकता है। आर्थिक प्रगति और सामाजिक प्रगति की नींव की शुरुआत दोस्तों हेल्थ से होती है, हेल्थ सेक्टर से होती है। और इसलिए हेल्थ सेक्टर में जब आप काम कर रहे हैं, यानी कि आप नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, देश को बनाने के लिए काम कर रहे हैं, स्वस्थ भारत रखने के लिए काम कर रहे हैं, तब जाके एक स्वस्थ भारत, एक समृद्ध भारत बन सकता है। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जब आप काम करने जा रहे हैं, तब मेरी अपेक्षा है दोस्तों, हर संभव हम 3 टाइप के जीवन हमने देखा है, या तो 3 टाइप की लाइफ होती है। एक लाइफ होती है मशीन की, इंजन की, जिसमें फ्यूल डालो चलता है, जिस दिन फ्यूल डालना बंद कर दो चलना बंद कर देते हैं, उसको इंजन कहा जाता है। इंजन भी आउटपुट देता है और व्यक्ति भी आउटपुट देता है। फर्क यह है कि इंजन है उसमें संवेदना नहीं होती है। हो कभी फट जाता है तो टूट के कहा जाएगा, किसको इफेक्ट करेगा, किसको उसका कोई पार्ट लग जाएगा,
उसके लिए उसकी उसमें सोच नहीं है। एक लाइफ होती है प्राणी की, एनिमल की। एनिमल पैदा होते हैं, अपनी दैहिक क्रिया करके अपना जीवन को समाप्त करते हैं, और एक लाइफ है मानव की दोस्तों। हम मानव है, हम दोनों से एक अलग है। हम यंत्र से यंत्रवत चलने वाले स्टूल नहीं है। हम प्राणी की ओर अपनी क्रिया को पूरी करके अपना जीवन को समाप्त करने के लिए नहीं है। हम मानव है, हम सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, हम समाज है। सिटीजन व्यक्ति समाज का निर्माण करता है, और समाज का एक बॉन्डिंग है। सदियों तक एक विशिष्ट बॉन्डिंग से यह देश चला है दोस्तों। इसलिए ये देश 2000 साल तक परतंत्र रहा, लेकिन ये देश की सिविलाइजेशन नष्ट नहीं हुई। अब ग्रीक और मेसोपोटामियम जैसी सिविलाइजेशन इस सृष्टि से खत्म हो गई। एक बार महान संस्कृति, महान सिविलाइजेशन के लिए वो जानी जाती थी। ये देश कभी समाप्त नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। हमारी संस्कृति, कभी ये देश पर हुणों ने शासन किया, कभी ये देश पर शकों ने शासन किया। 1000 साल तक ये देश पर मुगल वंश से लेके, लोधी वंश से लेके, खिलजी वंश से लेके ये लोगों ने शासन किया। 240 साल तक अंग्रेज ने हमारे पर शासन किया। दोस्तों, 2000 साल की परतंत्रता के बाद भी ये देश की सामाजिक व्यवस्था टूटी नहीं है। ये देश की सिविलाइजेशन को कोई नष्ट नहीं कर पाए हैं। उसका राज क्या है, उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट और कुछ नहीं है। उसका सीक्रेट केवल एक ही है, हमारी संस्कृति शुभ लाभ से धबकने वाली संस्कृति है। हम अपने द्वार पर लिखते हैं शुभ लाभ। हम अपने लाभ की तो चिंता करें, प्राणी मात्र करते हैं, विश्व की सारी सोसाइटी करती है। अपने के लिए सब कुछ करना हो तो करते ही है। लेकिन हमारी संस्कृति की विशेषता ये रही है, हम केवल अपने के लिए ही काम करने वाले लोग नहीं है, केवल अपना ही सोचने वाले व्यक्ति हमारा कल्चर नहीं है। मेरा कल्याण हो वो तो होगा ही होगा, लेकिन हम लिखते हैं शुभ, यानी कि दूसरे का भी कल्याण होना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की आधारशिला है। और ये संस्कृति ने ही, इस सिस्टम ने ही, जब देश में कोविड क्राइसिस शुरू हुई तो कई साइंटिस्ट लोग से मेरी मीटिंग हुआ करती थी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मीटिंग होती थी, और ये वर्चुअली मीटिंग में विश्व के साइंटिस्ट लोग ये चिंता व्यक्त करते थे कि हिंदुस्तान में कितने केस आएंगे, हिंदुस्तान कोविड मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हिंदुस्तान जिस तरह से कोविड मैनेजमेंट करेगा, उसके आधार पर दुनिया में कितने लोग मरेंगे। दुनिया का कोविड मैनेजमेंट या तो कोविड का पैरामीटर वो इंडिया तय करेगा, और सभी लोगों को शंका थी कि इंडिया मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, 1.5 महीने तक ये देश में फुल लॉकडाउन रहा। 130 करोड़ की जनसंख्या, बड़ा देश, ह्यूज डाइवर्सिटी। यहां गरीब वर्ग भी है, मध्यम वर्ग भी है, अमीर वर्ग भी है, एक दिन का कमाई करके एक दिन खाने वाले लोग भी है। लेकिन 1.5 महीने तक लॉकडाउन, बाद में उसकी इफेक्ट दुनिया में लॉकडाउन के खिलाफ आंदोलन हुआ, एजिटेशन हुआ, लेकिन इंडिया में कुछ नहीं हुआ। और इंडिया ने 1.5 महीने के लॉकडाउन को अच्छी तरह से पास किया। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे पहले कोविड क्राइसिस से बाहर निकल के प्रगतिशील इकोनॉमी का धनी हिंदुस्तान है दोस्तों। एक क्यों हुआ, कैसे हम सफल रहे, उसके पीछे का यही सीक्रेट है दोस्तों। सरकार से हो सके इतना सरकार ने किया, हमारे महाजन, हमारे एनजीओज, हमारे इंडस्ट्रीज, उससे हो सके इतना उन्होंने किया। लेकिन पड़ोसी ने अपने पड़ोसी का ध्यान रखा। मेरे घर के अगल बगल में कोई भूखा नहीं सोया है ना, उसका भी हमने ख्याल रखा दोस्तों। ये हमारी संस्कृति है। और इसलिए मैं उल्लेख करना चाहूंगा, ये मेरे युवा दोस्तों, हमारे देश का भविष्य है। संवेदना मरनी नहीं चाहिए, संवेदना मिटनी नहीं चाहिए।
आपका छोटा सा स्पर्श, आपका 2 वाक्य जो मरीज के लिए बोला हुआ होता है, उस सामने वाले व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए प्रेरणा दे देता है। और इसलिए हम जहां भी हो, जहां भी काम करें, ये भावना हमारे में रहनी चाहिए। और दूसरा, एक डॉक्टर बनाने के लिए, एक एम्स का स्टडी में देख रहा था, एक डॉक्टर बनाने के लिए सरकार को 1 करोड़ रुपया का खर्च लगता है। दोस्तों, आपके पीछे सरकार ने 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। आपकी जिम्मेवारी नेशन के प्रति है। सरकार कौन होती है? हम और आप सरकार है, यानी कि देश के लिए सरकार है, देश की सरकार है। सरकार की अपेक्षा पूरी हम कैसे करें? यहां बैठे हुए पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट और मैं, हम सब लोगों की एक साझी जिम्मेवारी है। हमें यहां तक दीप जलाना है जहां अभी तक अंधेरा है। हमें वहां तक पहुंचना है जहां अभी हेल्थ सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या माता पिता अपने बच्चे को, अपने बेटे बेटी को प्रोत्साहित कर सकते हैं? क्या यहां बैठे हुए मेरे स्टूडेंट, यहां बैठे हुए मेरे नए डॉक्टर मित्र, वो तय करे, मुझे बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं एमएस हूं, मैं एमडी हूं, मैं जाऊंगा गवर्नमेंट का एक काम करने के लिए, चाहे दूर सुदूर के क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे वो ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे वो हिमालयन रेंज हो, चाहे वो जंगल क्षेत्र हो, जहां हेल्थ एक्सेस नहीं हुई है, वहां हम स्वयं जिम्मेवारी लेके मेरे देश के नागरिक के लिए मुझे करना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। बदलते हुए भारत को हम हेल्थ एक्सेसिबल हेल्थ और एफोर्डेबल हेल्थ कैसे मुहैया कराए, ये भाव हमें निर्माण करना है दोस्तों। तब जाके देश बन पाएगा, देश आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, आपके लिए, भविष्य के लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। हमने केवल 5 साल के लिए मोदी जी ने सरकार नहीं बनाई थी। सरकार की टर्म 5 साल की होती है, लेकिन हमारी सोच नेशन के लिए रही है। आजादी के अमृत काल के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उस वक्त मोदी जी ने कहा कि 25 साल तक का हमारा हेल्थ विजन कैसे होना चाहिए, हमारे देश का हेल्थ सेक्टर 25 साल में हमें आगे बढ़ा के कहाँ ले जाना है, उसके पर एक विजन तैयार करना चाहिए। हमने उसके लिए कई चिंतन बैठकें की, राज्यों के साथ विचार विमर्श किया, घंटों नहीं दिनों तक बैठ के हमने 25 साल का अमृत काल का हेल्थ सेक्टर का विजन तैयार किया है, जो आने वाले दिनों में आपका एक समृद्ध भविष्य लेके आएगा, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ प्रोफेशनल के लिए लेके आएंगे। और इसलिए हमने हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया 2 विषय पर विचार किया है। हील इन इंडिया क्या है? दोस्तों, हिंदुस्तान के पास बेस्ट डॉक्टर है, जिसकी दुनिया में ख्याति है। एफोर्डेबल बट क्वालिटी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में है। दुनिया इंडिया में आए और यहां स्वस्थ होके जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान आने वाले दिनों में चालू होने वाला है। हेल्थ प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। और एक हील बाय इंडिया, हमारी संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, हम दुनिया को परिवार मानते हैं। हमारा हेल्थ प्रोफेशनल के लिए विश्व की अपॉर्चुनिटी ओपन करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, उसके लिए एक बहुत बड़ा विजन तैयार किया है, जो आने वाले दिनों में हमारे हेल्थ प्रोफेशनल के लिए एक दूसरी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर के लोग, हेल्थ प्रोफेशनल और उसके साथ भारत का भविष्य मोदी जी के नेतृत्व में बहुत समृद्ध देख रहा हो। और इसमें
हम अपना अपना दायित्व अदा करके आज जो आप डिग्री लेके जा रहे हैं, आज आपको जिस डिग्री मिली है, ये डिग्री आपको भी गौरव दिलाए और आपके गौरव के द्वारा नेशन को भी गौरव मिले, यही आज के कॉन्वोकेशन के अवसर पर सभी स्टूडेंट को मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें हील इन इंडिया और हील बाय इंडिया का मंत्र देने के लिए, हमारा प्रोत्साहन करने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए।